Hello and welcome back to The Seeking Soul. If you are watching us for the first time, a quick introduction. We are a family of three, Sudhanshu, Ankita and our dog Star, and we have taken a break from our city lives to come to the mountains and work here as teaching volunteers. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग ड्राइव कम ट्रैक पे। हम जा रहे हैं सबसे पहले शारगोल, जहाँ की एक मॉनेस्ट्री है जो काफ़ी फेमस है, तो हम आज वो कवर करेंगे। उसके बाद कल का प्लान है सापी लेक जाना, जो कि एक फ्रोज़न लेक है ऊपर ग्लेशियर के पास, एंड इट रिक्वायर्स लाइक अ 3-4 आवर्स hike. So we are pretty excited, and in the background Star and Sudhanshu look also excited. We have Shantanu here and we have Ishank. So let's have some fun. Situated at 4600 meters, Sapi is the highest settlement of Kargil region. ये मेन सिटी से करीब 70 किलोमीटर दूर है and takes a little more than 2 hours to reach. सो लद्दाख की और खासकर कारगिल की जो एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है इज़ दी चेंजिंग लैंडस्केप। सडनली डिफरेंट पहाड़ आ जाते हैं, एक पहाड़ आपने क्रॉस किया एंड द नेक्स्ट पहाड़ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, या फिर एकदम कवर्ड इन स्नो। सो इट्स वेरी गॉर्जियस एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ड्राइविंग ऑन दीज रोड्स एंड वॉचिंग दीज लैंडस्केप्स चेंज एवरी मिनट। ऑन द वे आपको देखने को मिलता है एक अमेजिंग मैन-मेड आर्किटेक्चरल मार्वल, द शारगोल मोनेस्ट्री, व्हिच इज आल्सो नोन एज केव मोनेस्ट्री। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं शारगोल मोनेस्ट्री। आप देख सकते हैं ऊपर, इट्स इनसाइड एक्चुअली इन बिटवीन अ केव, तो इसको केव मोनेस्ट्री कहा जाता है। गूगल पे इसकी लोकेशन अवेलेबल है एंड गाड़ी हमने पार्क कर दी है। नाउ वी हैव टू टेक स्टेयर्स, सो लेट्स गो। और बीच में लैंडस्लाइड हो गया है, तो वील हैव टू गो अराउंड इट। अनफॉर्चुनेटली मॉनेस्ट्री में ताला लगा हुआ है। आई थिंक लामा जी कहीं गए हैं, सो वी कैनॉट गो इनसाइड, बट बाहर से मॉनेस्ट्री लुक्स अमेजिंग। कैसे इन केव्स में ऊपर पहाड़ पे चढ़ के ये चीज़ें बनाई होंगी, इट ट्रूली अमेजेस मी विदाउट एनी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब हम लोग ड्रोन फ्लाई करेंगे यहाँ पर, एंड यू विल बी एबल टू सी अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द मोनेस्ट्री। सो लेट्स चेक आउट द ड्रोन फुटेजेस। तो गाइस, 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 10 मिनट में। एक तो यहाँ का मौसम बदल गया है, अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगी है, और दूसरा जब हम अपना ड्रोन फ्लाई कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली हमारा ड्रोन मॉनेस्ट्री की छत पे लैंड कर गया है, एंड लकीली वी गॉट द कीज ऑफ द मॉनेस्ट्री। सो नाउ सुधांशु हैज़ गॉन अप टू गेट द ड्रोन बैक। आई होप इट सर्वाइव्स। So let's see in what condition it is. So drone मिल गया है। वो बदल लूंगा मैं, वो बदल जाता है। हाँ जी। ये हमारे अंशुक भैया हमें फटाफट ले जाकर ये और यही उतार के लेकर आए छत से। ओह वाओ, छत पे रखा हुआ था। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच जूली जी।
this is the damage. बाकी और कुछ नहीं ना. सिर्फ विंग्स टूटे हैं. तो डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोपेलर्स खराब हुए हैं. तो लकीली हमारे पास एक्स्ट्रा हैं. तो या सो ड्रोन इज इन द रनिंग कंडीशन एंड अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए. केव मोनास्ट्री देखने के बाद हम चल पड़े सापी विलेज की ओर. Did you know that the word Ladakh actually translates to the land of passes? And इस रास्ते पर भी we crossed another pass called as Sapila. It is situated at a height of 14,500 feet and has amazing scenic views all around, including brown rugged terrain as well as snow-covered peaks in the same view. थोड़ा ही आगे जाकर we found another piece of nature's beauty, a small waterfall which had probably just begun to melt. It was a joy to look at. ओके सो हम सापी पहुंच चुके हैं एंड वी वर लुकिंग फॉर दिस पद्मा होम स्टे, जिसके बारे में हमने कहीं किसी वीडियो में देखा था शायद. एंड समहाउ वी जस्ट कुडंट फाइंड इट. हमने काफ़ी आगे तक गए, पीछे गए, तो एक दो लोगों से भी पूछा एंड वी हैव द नंबर बट नेटवर्क ही नहीं आ रहा है हम किसी के भी नंबर में, किसी भी फ़ोन में, तो हम वी कैन नॉट कॉल ऑल्सो. तो हमें पता चला कि नीचे एक डाक बंगला है. सरपंच जी के घर से हम चाबी लेकर उस डाक बंगले में ट्राई कर सकते हैं रहने का. तो वी केम ऑल द वे ट्रैकिंग अप एंड हियर इज समथिंग दैट हैपेंड एंड विच हैज टोटली ओवरवेल्म्ड मी. एंड वी वर टू स्ट्रेंजर्स स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. उन्होंने पूछा आप कौन है, हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा एंड दे एक्चुअली कॉल्ड अस इनसाइड एंड उन्होंने पूरा the way they welcomed us, the warmth with which they welcomed us, they just took us inside. उनका बाहर ठंडे अंदर आओ, फिर चाय ऑफर किया एंड अंकिता एंड शांतनु वे आर आउटसाइड. सो वी टोल्ड देम नो नीड टू बॉदर, तकलीफ मत कीजिए. बट उन्होंने सारा बातचीत शुरू हुआ तो उन्होंने कहा डाक बंगले में रहेंगे तो ठंड लगेगा आपको, पानी भर के लाना पड़ेगा, खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं. टुडे दिस मूवमेंट इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं इतने ओपन है, इतने इनोसेंट हैं और इतने वेलकमिंग हैं, ये शायद हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है. सो थैंक्स टू गॉड दैट दिस थिंग स्टिल एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड. What are we making? We're making chana dal and chawal. So Sudhanshu and Nomole are fighting amongst themselves कि बर्तन कौन धोएगा. So after having an amazing dinner, it's time for us to sleep so that we wake up fresh in the morning for the trek. And कहाँ तो हम टेंट रख कर आए थे अपनी गाड़ी में कि हम टेंट में कैंपिंग करेंगे, बट इट्स डैम कोल्ड एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि हमें ये लोग मिले, हमें ये जगह मिल गई एंड वी गोना हैव अ कम्फी स्लीप ऑन अ कम्फी बेड राइट देयर. सो सी यू टुमारो मॉर्निंग. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग. अभी बज रहे हैं 6 और माउंटेन्स पे हो रहा है बहुत ही अमेजिंग सनराइज़. हमने प्लान किया था 5:30 उठने का, बट उठते उठते ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं. तो नाउ वी गोना गेट रेडी एंड मोस्टली स्टार्ट द ट्रैक बाय 7:30.
starting from where we were staying, तो थोड़ी दूर अराउंड 2-3 किलोमीटर्स तक हमारी कार जाएगी. फिर वहाँ पे हमें कार अपनी पार्क करनी है एंड देन उसके बाद द ट्रैक स्टार्ट्स. Sapi Lake is a high-altitude glacial lake situated next to the Gangchanmo Glacier, which feeds the lake. इस लेक तक पहुंचने के लिए it takes a 3 to 4 hours of hike of about 6 kilometers through a scenic trail of alpine plants and flowers. तो बहुत ही अमेजिंग ट्रेल है, बीच बीच में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट द व्यू कीप्स यू गोइंग. सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन. Top of the world, very peaceful. A beautiful milky white stream also originates from the lake with different, rare and unusual flowers and medicinal herbs at its banks. इसके अलावा you also get to see wild rabbits, marmots and wild yaks on the trail. इस ट्रैक को करने का ideal time is around the months of June and July. बट फिर भी यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसलिए वन शुड गो प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़. तो वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं, द लेक इज़ समवेयर देयर. लोकल्स उस पहाड़ को सरकटा पहाड़ भी बुलाते हैं बिकॉज देयर आर 2 माउंटेन्स. वन ऑफ इट हैज़ अ पीक एंड द अदर वन इज स्लाइटली फ्लैट. सो इन द लोकल कम्युनिटी दे कॉल इट सरकटा पहाड़. So it is Star ka water break. We try to feed him with bottle, but he doesn't drink. He likes to drink from the flowing stream water. So we're taking a short break for Star so that he is not thirsty. There is an interesting phenomena which makes this lake special and unique is that it keeps changing its color throughout the 15 days of lunar cycle. Sometimes it is milky white and at other times it is turquoise blue due to a phenomena which is still unknown. 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे. तो पिछले 500 मीटर से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर चालू हो गए हैं जिनके ऊपर हम चल रहे हैं. तो इट हैज़ बिकम लिटिल टायरिंग बट द व्यूज़ हैव बिकम इवन बेटर. Towards the end of the trail, the climb becomes very steep and this is where it started snowing, as well as we saw that Star got a bit tired. It was already 1 p.m. by now and it was time to do some Pet Puja.
guys, I think we are just 300 meters away from the lake. But मौसम ख़राब हो गया है. It's snowing and काफ़ी बादल आ गए हैं. तो we have decided not to trek any further. सुधांशु ने यहाँ पे ड्रोन भेज के लेक का काफ़ी अच्छा फुटेज लिया है जो हम आपको दिखाएंगे अभी. But we can't go any further. And हमें उस बात का काफ़ी अफसोस है. लेकिन I think that's the right thing to do. अगर मौसम ख़राब है तो we should immediately start the descent right now. Sapi Lake is a big example of how global warming is affecting our planet. बहुत सारे विलेजेस की तरह सापी विलेज भी अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए सापी लेक पर डिपेंडेंट है और पिछले 8-10 सालों में इस लेक का साइज़ घटकर आधा हो गया है. And hence, it is important that we travel responsibly as well as live responsibly in our day-to-day lives in order to conserve, preserve our nature and such miracles of nature like Sapi Lake. That star leading the way, he actually has figured it out and is quite intelligent that बीच बीच में रुकना है, चेक करना है पीछे वाले लोग आ रहे हैं कि नहीं. Star is our ideal trek guide. He waits for us till we catch up. He stops and then he maintains a distance and moves again. Okay, it seems our guide has found a new way. So we did this trek ourselves, but after finishing the trek we realized that it is not an easy trek. It is moderate to a little difficult trek, and hence it is absolutely important that you hire a local travel guide so that you take the best route possible and your overall experience is amazing. There are many local travel companies in Kargil who do this trek. One such company is Roots Ladakh, and their details we have mentioned in the description box below. So we are back from the trek. हालत काफ़ी खस्ता है हम सबकी, बट हमने तुरंत वापस आकर सामान गाड़ी में डाला हल्का थोड़ा बहुत स्ट्रेच करने के बाद. नाउ वी आर ऑफ टू आवर होम. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट ट्रैकर ऑफ दिस ट्रिप. तो स्टार ने जाते वक्त तो हमें फॉलो किया एंड काफ़ी धीरे धीरे चला, बट आते वक्त पता नहीं कहाँ से स्टार में सडनली एक एनर्जी बूस्ट आया एंड ही वॉज आवर ट्रैक लीडर वाइल वी वर कमिंग डाउन. एंड for once, I think he's tired. Usually Star is an outdoor dog. He loves to walk, run around. But today he looks tired because obviously 12 to 13 kilometers is a lot of walk for him. So उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए. और अगर आप हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.